Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Masood here and welcome back to my channel Learn English with Masood. Student, today we are going to make another précis of the passage, and that is passage number 6. How to make a précis. Let's get started. This is the sixth one. This is your sixth paragraph. You have already done 5 paragraphs successfully, and this is a bit difficult one, but you can do it. I hope you can do it. In first steps, what you have to do, you have to read the passage. You have to read the passage. This is reading of the passage. The passage is there for, this is for reading and marking the passage within the passage. What we have to do, we have to divide this passage into further passages. Okay, it must be remembered, yes, it must be remembered that Gulf states, here we have Gulf states, are more effective amongst oil exporting countries, and these states were in forefronts when supply of oil to western countries was stopped, जब उनको रोक दिया गया in 1973. अब यहाँ तक देखें, आपका एक आइडिया जो है आपको यहाँ मिल जाता है. तो इसके बाद सेकंड आइडिया स्टार्ट करते हैं. अब सेकंड में यहाँ पर है these states have great influence, इनका बहुत ज़्यादा असर था in changing the price of oil of OPEC. OPEC mean Organization of Petroleum Exporting Countries. Okay, present Iraq-Iran war has turned Gulf states, here we have Gulf states, and Iran against each others. Both countries, इन दोनों ने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया, have used every method to harm each other in economic fields. यहाँ तक आपका एक सेकंड पैरा बन गया. This confrontation also had a bad effect on the price of oil. This is the main purpose, this is the main theme of this passage. So don't be worried about the length of this passage. Okay, for instance, Gulf states maintain that reduction in price is the conspiracy का मतलब होता है साजिश of western countries, especially America, UK and Mexico, because on one hand America and her allies उसके इत्तेहादियों ने मिलके क्या किया, reduce the import of oil, and on the other hand oil exporting western countries started selling more oil at reduced price. So here we have the second idea. From here, this is the third one and this is the second one. You can talk about here, this is the second one, this is the first one. So here we have the first passage, and this is your second, and this one is your third one. So move to the next one. This is a long passage, but don't worry. OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Yes, the same passage, this is continue. On the contrary, Iran is of the view that UK and other Western countries cannot exert their influence on the price of oil, that Saudi Arabia and Kuwait, on a suggestion from America, have increased the oil production of make up the shortage in their income. ये जो पीछे हमने थर्ड पैराग्राफ में बात की थी, ये उसी की एक एक्सप्लेनेशन है. This is your fourth one. अब ये आपका fourth one हो गया. Both these countries are far ahead of other OPEC countries. Okay, OPEC countries in oil reserves, yes, production and exports. इनके अंदर ऑयल प्रोडक्शन भी थी और एक्सपोर्ट्स भी थी, बहुत आगे निकल गई. ऑयल प्राइस इन वर्ल्ड मार्केट वाज अफेक्टेड, उस पर बुरा असर हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल. जब इन ओपेक
जो थे इन्होंने उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा की तो उसकी जो प्राइस थी वो कम होना शुरू हो. The oil by these two countries. The fact is that during the last 12 years, due to extraordinary increase in the oil price, yes, oil price, oil importing countries starting using alternative. अब जो import करते थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनर्जी एंड अल्टरनेटिव मीन्स, अब जो ऑयल इंपोर्ट करते थे ना उन्होंने इसके दूसरे जो मीन्स थे उसको डेवलप कर लिया, ठीक है, और रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन इंपोर्टेड ऑयल, और इस तरह उनको जो इंपोर्ट ऑयल करने वाली थी वो होगी. अब इसमें आप आइडिया ये देखें कि आइडिया ये डेवलप हुआ है कि उनकी कॉन्स्पिरेसी से उन्होंने प्रोडक्शन की, प्राइस डाउन की, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, और उसके नतीजे में जो इंपोर्ट करने वाले जैसे हमारे मुल्क हैं इन्होंने दूसरे जो ज़राए थे वो शुरू कर लिए, ठीक है. अब ड्यूरिंग 1973 to 85, ठीक है, ये न्यूज़पेपर से एक क्लिप है और ये प्रेसी में सिलेक्ट इसी तरह किए जाते हैं. वर्ल्ड कंजम्पशन ऑफ ऑयल डिक्रीज्ड, ठीक है, बाय 8% एंड यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव मीन्स इंक्रीज कंसिडरेबल. अब ये जो टोटल वर्ड्स है ना इसके वो तकरीबन है जी 260 वर्ड्स हैं. व्हाट वी हैव टू डू, 1/3 में चेंज करना है तो 88 पे जाना है, ठीक है, ये हमारा टास्क है. अब इस टास्क के लिए पहले आप इसकी सेकंड स्टेज पे जाएंगे और उसमें इसके जो ओरिजिनल कीवर्ड्स हैं उनको हम निकाल लेंगे, ठीक है. In this step what we have to do, we have to write down a draft of the Precis, ठीक है. ये ड्राफ्ट है, इसमें हमने कुछ वर्ड चेंज कर लिए हैं और कुछ नए लगा दिए हैं, कुछ वही अभी लिए हैं, और ये सारे वर्ड्स इसके अंदर वही हैं जो कि आपकी मेन पैसेजेस में आए हैं, ठीक है. इसमें आपने एक फर्स्ट बना लिया क्योंकि ये एक लेंथी पैरा था तो हम इसको जरा डबल तरीके से, या हाफ भी हो सकते हैं वर्ड्स, इसमें आपने घबराना नहीं. The writer says that the Gulf states are operative in oil exporting countries. They lead to supply oil to Western country को देते थे वो, तो ये उनकी एक लीडिंग पोजीशन थी, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया प्राइसेस के ऊपर. लेकिन ईरान इराक वार के दौरान क्या हुआ कि ईरान और सऊदीया ने आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसमें ईरान इराक को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली उनको हो गया. और उसी दौरान अमेरिका ने अपने अलाइड से मिलकर क्या किया कि प्राइस रिड्यूस कर दी, उसने ये कॉन्स्पिरेसी की थी, ठीक है. ईरान वाज द व्यू दैट यूके एंड अदर कंट्रीज कैन नॉट एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइसेस ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एज बोथ ऑफ देम हैड रिजर्व्स ऑफ ऑयल्स एंड ऑब्स्ट्रक्टेड ऑयल प्राइसेस. उसने कोशिश की क्योंकि उसके पास रिजर्व्स थे, लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज थी जो इंपोर्ट करते थे, जब उनको प्राइसेस की फैक्चुअल यानी उसकी पता चली तो उन्होंने क्या किया, यूजिंग डिफरेंट मीन्स ऑफ एनर्जी यूज करना शुरू कर दिया. ये आपने मैंने याद रखना है. अब ये जो एक फर्स्ट प्रेसी बनी है ये हमारा एक फर्स्ट ड्राफ्ट है, ठीक है. इस फर्स्ट ड्राफ्ट में हमने जितने भी वर्ड लिए हैं वो हमारे जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं, ठीक है. वो कितने हो गए हैं, वो 148 तकरीबन ये बनते हैं. अब फर्दर इसकी एक और प्रेसी करेंगे हम, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं. अब इसमें हमारा एक थर्ड स्टेप जी. अब हमने जो फर्स्ट पैसेज तैयार किया था ना जो कि कुछ लेंथी था, उससे एक फर्दर बनाएंगे, ठीक है. उसमें भी वर्ड ज्यादा थे, उसमें से कुछ वर्ड्स कम करके चेंज करके हम एक नेक्स्ट पैरा बनाएंगे. ये शॉर्ट करने के लिए हमें कुछ ग्रामर कुछ वोकैब चाहिए होती है, तो आई सजेस्ट कि आप एक पॉजिटिव वर्ब्स की वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम वर्ड्स को शॉर्ट कर सकते हैं. ये ईरान हार्म्ड ईच अदर ऑन अमेरिका. अब ये जो हमने सेकंड पैरा तैयार किया यानी सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया है वो उससे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये कुछ लेंथी है. हमें जाना है 88 वर्ड्स पर, और ये तकरीबन फिर हमारे पास जो है 123 वर्ड्स बनेंगे इस सेकंड प्रेसी के.
तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए, हमें 88 वर्ड्स तक जाना है, ऑलमोस्ट 80 या 90 वर्ड तक जा सकते हैं। तो ये जो हमने सेकंड प्रेसी बनाई है, यानी सेकंड ड्राफ्ट बनाया है, इससे अब हम फाइनल तैयार करेंगे। इसमें देखें आपकी रेपिटेशंस हो रही हैं, यहाँ पर आपने रेपिटेशन भी नहीं करनी है। देखें वेस्टर्न कंट्रीज कैनाडा एक्सर्ट लिखा हुआ है, प्राइस का लिखा हुआ है, इट कॉज इंक्रीज लिखा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा और शार्ट करके हम फाइनल पे जा सकते हैं, तो उसमें रेपिटेशन आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी। ठीक है, आपका ये भी जो पैराग्राफ है, ये भी आपका एक ड्राफ्ट है। ठीक है, ये भी हमारा एक ड्राफ्ट है। अब लास्ट में चलते हैं जी, ये हमारा फाइनल जो है वो प्रेसी बनेगी, और उस हमने सेकंड वाले जो पैराग्राफ है उससे आगे लेके चलेंगे। Now we have the final précis of the second draft. Okay, for this passage we have to make 2 drafts and then the final précis. Writer says that Gulf states lead oil exporting countries and have an impact on the price of oil of OPEC. During Iran-Iraq war, Gulf states and Iran harmed each other. America and her allies started selling oil at reduced price. So this is reduced is the word, that is your past participle adjectives. Okay, this is your noun. Iran and UK increased their production of oil and obstructed. This is your verb. This is simple past. Oil price in world market, it caused an increase in the oil price. Oil importing countries, again this is present participle adjectives. Importing, this is not the verb. Oil importing countries, because it modifies your noun, countries. Started using, this is your past, simple past, started using. Okay, a different means of energy and slowly decreased. This is simple past, decreased, depending on imported oil. Thus during 1973 to 1985 world intake mean consumptions, that is a noun, of oil decrease. So we got the final target, that is 88 words of this passage. This is a bit difficult, but you have to learn that you should not repeat the concept. You should not make any repetition in the passage. So this is the final, and the title must be, I suggest you can make in another one, confrontation between Arab and Iran. Okay, confrontation between Arab and Iran. This must be the title of this passage, because during 1973 to 1985 war is there. So this is a clip from newspaper. So précis can be selected from old paper or new paper as well. I hope you enjoy this video, you like this video, and if you still have a question, you can put your question in the comment box. And I must suggest that you should watch my video of causative verbs, past participle adjective and present participle adjective, because these videos will be very helpful for making précis. Thank you.